Prabhupada beat her. Jai Madhava Kunja Bihari Gopidana Balaba Girivadadhari Yashodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare, 1, 2, 3, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Oh Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Nitai Kodha Devo Hadevo Nitai Kodha Devo
Srila Prabhupada ki jai. इस प्रकार से जाऊंगा। It was a great pleasure for me to be here in Charan. उज्जैन, Ujjain. यह मेरे लिए बहुत ही आनंदवर्धक था कि मैं यहाँ पे उज्जैन में था। That hangs actually to the American president. The American president, he was saying he was invited in Dubai. अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि उनको दुबई में आमंत्रण किया गया था। He said, "I'm so happy to be finally in Dublin." मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डबलिन में हूँ। I always wanted to come to Ireland, so I'm happy to be here. He said, डबलिन एक आइलैंड है और he said, Mr. President, you're in Dubai. किसी ने कहा कि राष्ट्रपति आप दुबई में हैं। I said, oh yeah, that happens when you're old. तो लगी हाँ ऐसा होता है। But anyway, it was wonderful here. This is a wonderful piece of devotional art that Bhakti Maharaja performed here. I told to some of you, he was a young student of engineering, I believe, in Hamburg. When he came to the temple, I was a young Brahma child, and I was actually talking to him about Krishna consciousness. And then, yeah. यह मंदिर एक बहुत ही अद्भुत नमूना है श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज की भक्ति का। तो जब वे एक इंजीनियर थे, यंग काफ़ी जवान थे, और हम हैम्बर्ग में थे, तो मंदिर में आए थे और मैं उस समय एक नौजवान ब्रह्मचारी था और मैं उनसे कृष्ण भावनामृत के बारे में बात कर रहा था। And then we heard he was one among the many students that came to the temple. कई सारे विद्यार्थी मंदिर आए थे। Then we heard he wanted to go back to India. फिर हमने सुना कि वह भारत जाना चाहते थे। Then we heard he got first and second initiation. फिर हमें पता चला कि उन्हें पहली और दूसरी दीक्षा मिल गई है। That was already a shock for us because we had to wait for second initiation 3 years. तो उनको इतनी जल्दी दूसरी भी दीक्षा मिल गई, लेकिन हमें सालों इंतजार करना पड़ा था दूसरी दीक्षा के लिए। And then he shocked us again when we heard that he took sannyas. फिर हम और भी अचंभित हो गए जब हमें पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। All these are very shocking news for us. यह सब हमें बहुत ही अचंभा करने वाला था। And so even in Mayapur, one of our sannyasis, मायापुर में हमारे एक सन्यासी, a god brother of mine, हमारे गुरु भाई, I will not say his name, हम उसका नाम नहीं लेंगे, he became a little jealous. वह कुछ ईर्ष्यालु हो गए थे। He said to Prabhupada, I had to wait for so long till I could take sannyas. उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद हमें संन्यास लेने के लिए इतना देर लगी। And Prabhupada could detect there was a little jealousy there. श्रील प्रभुपाद समझ गए कि कुछ ईर्ष्या की भावना है। And Prabhupada accomplished 2 things at the same time. श्रील प्रभुपाद ने एक साथ 2 चीजों को पूरा किया। As far as the jealousy is concerned, he said, well, he was more advanced at birth than you are now. तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये जन्म के समय ही उतने उन्नत हैं कि जितना आप अभी हैं। That cut on his pride. ये उनके अहंकार पे श्रील प्रभुपाद ने तीखा प्रहार किया। On the other side, there may be some truth in it. और दूसरी तरफ इसमें कुछ सत्य भी है। Like Krishna always accomplishes so many things at the same time. भगवान कृष्ण एक साथ ही कई सारी चीजों को पूरी कर देते It हैं। wouldn't be surprised. यह बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं है। Because he could accomplish so many amazing things, building this temple in 9 months, 20 days, something. 10 months or what was it? 9 months 20। 9 months, who can do that? उन्होंने यह मंदिर सिर्फ 9 महीने 20 दिन में बना दिया। यह कितना आश्चर्यजनक है, कौन ऐसा कर सकता है? I mean, okay, Vishwakarma built Dwarka overnight. That's a fact. भगवान कृष्ण ने द्वारका में एक दिन में ही पूरा निर्माण कर दिया। But that's Vishwakarma. लेकिन किया। So it was a masterpiece. And not only that, then you have this next house, Brahmachari quarters, assembly hall. No, it's not assembly hall, Brahmachari quarters, administration, Brahmachari quarters. The next building you have guest house, then you have assembly hall, convention hall. Two huge apartment blocks. Goshala, then you have the school over there, and you have a department for daily department, and you have a department for dresses. I mean, what's next? तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिया। इतने कम समय में इतना बड़ा मंदिर, ब्रह्मचारी आश्रम, गेस्ट हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, अपार्टमेंट, गौशाला, स्कूल, डीटी ड्रेस
और क्या हो सकता है इससे ज्यादा? So I have not seen anybody doing this in ISKCON. ISKCON में मैंने और किसी को इतना ज्यादा कुछ करते नहीं देखा है। I went to Ireland and yes, we bought a nice island in the middle of a lake. Yes. मैं अपने केस में मैं एक आइलैंड गया और वहाँ पे हमने एक थोड़ा सा आइलैंड। It's in the middle. It's very beautiful, and we have some mainland farm. Don't have a guest house in 35 years. तो अभी 5 साल हो गए हैं, हमने वहाँ पे हमारा एक छोटा सा फार्म है, लेकिन अभी तक हमारे पास गेस्ट हाउस नहीं है। Especially empowered by Prabhupada. वह निश्चित रूप से ही बहुत ही विशेष थे और उनको वही शक्ति प्रदत्त थे श्रील प्रभुपाद के द्वारा। It was also amazing that in the last days of Prabhupada's life, यह बहुत ही आश्चर्यजनक कि श्रील प्रभुपाद के आखिरी दिनों में I was in the room for about 3 weeks in his last 3 weeks. मैं आखिरी के 3 हफ्ते उनके कमरे में ही था। And I saw Bhakti Swami taking care of Srila Prabhupada. और मैंने श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज को उनका ख्याल रखते देखा। So one day Prabhupada wanted medicine. और एक दिन श्रील प्रभुपाद ने एक दवाई के लिए कहा। On the second last day of his life. और यह उनके जीवन का आखिरी दूसरा दिन था। And his servant gave him medicine. उनके सर्वेंट, उनके दास ने उन्हें एक दवाई दी। Prabhupada asked this question. He said, "Did you close the bottle?" श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या आपने बोतल का ढक्कन बंद किया? Because Prabhupada was a medical man. क्योंकि प्रभुपाद स्वयं एक मेडिकल मैन थे। He would open a bottle. उन्होंने takes the hold on to the bottle, puts the medicine here, and close the bottle. And then administer the medicine, because otherwise he may knock the bottle over. You see, so he was very careful. तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही ध्यानपूर्वक हर एक काम किया करते थे। वो बोतल में से दवाई निकालते थे, उसको बंद करते थे, फिर दवाई लेते थे, क्योंकि हो सकता है कि उनके हाथ से नहीं तो वो पूरा दवाई गिर जाती। So the servant took the bottle, took the medicine, gave the medicine to Prabhupada, to close the bottle. तो श्रील प्रभुपाद के जो दास थे उन्होंने बोतल से दवाई निकाली, दवाई श्रील प्रभुपाद को दी, लेकिन ढक्कन लगाना भूल गए। And then Prabhupada started to philosophize. तो श्रील प्रभुपाद फिर उन्हें ज्ञान देने लगे। He said, "That is your disease, all of you. बोले कि ये तुम सबकी बीमारी है। You know how to open bottles, you don't know how to close them. आप ढक्कन खोलना जानते हैं, लेकिन उसे बंद करना नहीं जानते। You start so many consequences. You start so many new things. आप इतनी सारी नई चीजें शुरू कर देते हैं। Our society has been troubled since Prabhupada left by new things. हमारी जो संस्था है इसका कारण बहुत सी समस्याएं हुई हैं, क्योंकि हमने कई सारी नई चीजें शुरू कर दी हैं। This new thing, that latest thing. ये नई चीज, वो नई चीज, और भी आधुनिक चीजें। It has been going on since Prabhupada left. यह उस समय से चल रहा है जब से श्री प्रभुपाद यहाँ से चले गए। Although Prabhupada told us repeatedly, don't change anything. I have given you everything. श्री प्रभुपाद ने यहाँ कई बार कहा कि आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ दे दिया है। So anyway, we know how to open bottles. We don't see the consequences. फिर भी हम क्या करते हैं, हमें बोतल खोलना आता है और हमें उसका परिणाम नहीं पता कि क्या होगा। Because that is the mood of the material world. क्योंकि भौतिक संसार का यही भाव है। Actually, in the spiritual world, everybody is just serving Krishna and pleasing Krishna. आध्यात्मिक जगत में हर कोई भगवान की सेवा करता है और उन्हें खुश रखने का प्रयास करता है। So, and the relationship is based on love. और उनमें जो संबंध है वह प्रेम पे आधारित है। It is based on giving. यह भगवान को कुछ देने पर आधारित है। Pure love of God. भगवान का शुद्ध प्रेम Is completely pure. यह पूरी तरीके से शुद्ध है। Like milk is pure. जिस प्रकार से दूध शुद्ध होता You है। put lemon into the milk. अगर आप नींबू दूध में डालेंगे, And you have on one side paneer, and on the other side the whey. हाँ, तो आपको फिर उसमें दूध में नींबू डालने पे पनीर और छाछ अलग मिलेगा। This is called mundane religion. और यह बोलते हैं भौतिक संबंध। It splits, and you can never turn it into milk again so easily. और फिर आप इसको वापस दूध में आसानी से नहीं बदल सकते हैं, Unless you turn to Krishna. जब तक आप भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। Krishna can do anything. Turn whey and paneer into milk or milk into whey. He can do that. We cannot unless Krishna empowers us. तो भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। भगवान
छाछ और पनीर को दूध में बदल सकते हैं, दूध को छाछ और पनीर में बदल सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान शक्ति ना दे। By nature, religion is pure. तो वहाँ पे हमारा जो स्वभाव है वह शुद्ध है, But due to the influence of the modes of nature, it becomes polluted. लेकिन माया के प्रभाव से हम प्रदूषित हो जाते हैं, It becomes affected by the material world. हम भौतिक जगत से प्रभावित हो जाते हैं। So in the same way, if you are the doorman in front of the spiritual world, तो इस प्रकार से यदि आप आध्यात्मिक जगत में एक द्वारपाल के रूप में हैं, the doorman will say, "What do you want to do in the spiritual world?" तो फिर द्वारपाल बोलेगा कि आप आध्यात्मिक जगत में क्या करना चाहते हैं। Somebody says, "I want to be God." तो कोई बोलेगा कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। Very good. There's a religion for that. And Mayavada philosophy, the Lord created one particular religion for that purpose. You want to become God? You go. It's a trap. The last snare of Maya, as Krishna says, Prabhupada says. तो फिर भगवान ने इसके लिए एक अलग धर्म ही बना दिए जिसे मायावाद कहते हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो यहाँ का आखिरी पड़ाव है कि मैं भगवान हूँ। I want to see Krishna. मैं भगवान कृष्ण भगवान को देखना चाहता हूँ। Somebody knocks at the pearly gate. कोई अगर दरवाजा खटखटाए, Brahman said, "What's your desire?" द्वारपाल बोलेगा कि आपकी क्या इच्छा है? "I want to worship God." मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। But what else you want? लेकिन और क्या चाहते हो? "I like eating meat." मुझे मांसाहार पसंद है। Okay, there's a religion for that. ठीक है, आपके लिए भी अपना एक धर्म You है, go right back. आप वहाँ वापिस जाओ, You can have that. आप वापिस वो सब कर सकते हो। Another one was, "I want to go to God." फिर एक तीसरा आदमी जाता है, खटखटाता है, बोलता है मैं भगवान के पास Brahman जाना came, चाहता हूँ। "Oh, what can I do for you?" द्वारपाल पूछता है कि क्या I चाहिए? want to worship God. बोलता है मुझे भगवान की पूजा करनी है। What other desires you have? आपके पास और क्या इच्छा है? Sex. मुझे यौन संबंध बनाना Right, है। there is religion for that. ठीक है, तुम्हारे पास भी अपने धर्म है। One of our world religions, if you die for God, you go to heaven and enjoy the sex life with how many, 96 or whatever women. The desire is there for sex. तो हमारे यहाँ एक धर्म है जिसमें ऐसा धारणा है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हुए मरते हैं तो आपको फिर स्वर्ग में जाने को मिलेगा, जहाँ पे अपनी काम वासना को पूरा कर सकते हैं। So by the end of the day, all religions in the world are somehow God inspired. तो हर किसी ना किसी प्रकार से इस संसार में जितने भी धर्म हैं वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त किए हैं। Even mundane religion. यहाँ तक कि भौतिक धर्म भी। It has to be. People have to be satisfied. लोग ये हवन करना चाहते हैं। But mundane religion is blind. लेकिन भौतिक धर्म अंधा है। It has no deep knowledge. उसमें कोई गहरा ज्ञान नहीं Not है। even knowledge of the soul. उनमें आत्मा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। Then again, Prabhupada used to say, blind uncle is better than no uncle. श्री प्रभुपाद कहते थे कि अंधा मामा, Better mundane religion than no religion. कि अंधा मामा काने मामा से भला है। मंडेन रिलीजन, Because it says mundane religion, at least there is law. If people follow that, there is law and order. तो मंडेन रिलीजन बिना किसी धर्म से अच्छा है, क्योंकि अगर मंडेन रिलीजन भी है तो लोग कोई ना कोई नियम कानून का पालन करेंगे। People have some ethics. लोगों में कुछ Christian ethics, values Muslim ethics, etc. There's ethics. उनमें कुछ मूल्य रहेंगे। If there is no religion, लेकिन अगर कोई कहता है कोई धर्म you नहीं, cannot hire enough policemen to keep law and order. तो आप पुलिस को भी नहीं ले पाएंगे कि नियम कानून वो बना के रखें। It becomes chaos. तो यह पूरी तरह से आपत्तिजनक। So therefore, mundane religion, although it is blind uncle, it is better than no uncle. तो यद्यपि भौतिक धर्म है वह एक काने मामा के समान है, लेकिन फिर भी वो बिना But किसी मामा के better than blind uncle is an uncle that can see. कम से कम एक जो काना मामा है कुछ तो देख सकते हैं। The uncle with a stick कोई जो जैसे कि कोई अंकल है वो is a cane of Hari, the hurricane of Srila Prabhupada. तो जैसे कि एक छड़ी होती है श्रील प्रभुपाद की, Prabhupada's hurricane. प्रभुपाद की हरी, Because he can give knowledge. क्योंकि वो हमें ज्ञान प्रदान किए। And that's the end of mundane religion. और यह Therefore, Krishna says, Sarva Dharman Parijajya Mamikam Saranam Vraja. Give up these mundane, Manu Dharma. भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, आप मनोधर्म को छोड़ दो। There's so much concoction in the world of religion. इस दुनिया में लोग कितने मनोधर्म करते हैं, मनोचिंतन। I read on the internet, one man in Tamil Nadu built a temple for Donald Trump.
तो हमें पता चला कि तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मंदिर बनाया है। He's thinking Trump is God. उनको लगता है कि ट्रंप भगवान है, And so he chants on his beats, you know. तो अपनी माला पे उनका नाम जपता है, Donald Trump, Donald Trump, 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 Donald, Donald, Donald Trump, 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 Donald, Donald. तो वो डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप ट्रंप, डोनाल्ड डोनाल्ड इस प्रकार मंत्र का जप किया करता है। In America, we used to go to rainbow gatherings. तो हम लोग अमेरिका में रेनबो गैदरिंग, Rainbow gathering. It's a famous gathering. More than 40,000 young people gather in the national forest. तो रेनबो गैदरिंग एक ऐसा समूह है जहाँ पे कई सारे युवा एकत्रित होते हैं, लगभग 40,000 अमेरिका में। They're all hippies and green people, alternative people. तो फिर जैसे जो लोग अपना हरियाली का प्रचार करना चाहते हैं या फिर शांति का प्रचार करते हैं, वो वहाँ पे एकत्रित होते They हैं। have one good thing. लेकिन उसमें एक अच्छी चीज है, Everybody believes in some way of God. लेकिन सब लोग किसी न किसी प्रकार से There are भगवान में यकीन no करते हैं। communists, there are no atheists. It doesn't exist. तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिस्ट या फिर कोई भी नास्तिक नहीं रहता And है। of course, there are different concepts of God. हाँ, हो सकता है कि उनमें अलग अलग धारणाएं हो भगवान की। God may be the forest, God may be the ocean, God may be the sun, or so many ideas. उनके लिए भगवान हो सकता है कोई जंगल हो, कोई समुद्र हो, कोई सूर्य हो, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से भगवान में यकीन रखते हैं। But at least they believe in God. कम से कम वे भगवान में विश्वास रखते हैं। Of course, it is all mundane religion. यद्यपि यह एक भौतिक धर्म है, It's mundane conclusions. सारे भौतिक निष्कर्ष हैं। Like I remember there was one group of Christians. The Christians believe in generally that Jesus saves you. You're saved by Jesus. Jesus saves you from sin. तो यह एक धारणा है क्रिश्चियंस में कि जो जीसस हैं वे लोगों को पापों से बचाते हैं। So that's established. If you ask any Christian who believes that Jesus frees me from all sin, they say yes, that's true. अगर आप किसी भी ईसाई से पूछेंगे तो आप वो पूछेंगे कि क्या जीसस आपको पाप से बचाते हैं, वो बोलेंगे हाँ। So there are a group of radical Christians and they made a huge banner. तो रेडिकल क्रिश्चियन का अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैनर है। They say unless we sin, Jesus died for nothing. तो वो बोलते हैं कि यद्यपि हम नहीं पाप नहीं करेंगे तो जीसस आखिर अपनी जान किस लिए दी है। In other words, let's sin as much as possible. तो इसलिए जितने पाप कर सको कर सकते हो, Otherwise, Jesus died for nothing. क्योंकि नहीं तो फिर जीसस की जो अपना जान दी है उसका मूल्य क्या। The human being has always a way to get the utmost sense gratification of whatever the situation may be. तो कोई भी परिस्थिति हो, मानव के पास हमेशा अपना कोई ना कोई तरीका होता है जिससे वे अपनी इंद्रिय तृप्ति कर So that's सके। mundane religion. यद्यपि यह एक भौतिक And धर्म है, mundane religion has to go. भौतिक धर्म को आखिर में कुछ समय बाद जाना ही पड़ेगा। Instead of mundane religion that you try, you want to do whatever you like in the material world, but you have some religion. तो भौतिक धर्म के बदले आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। We want to come to religiosity where we do what Krishna likes. हम वास्तव में हम धार्मिकता की ओर तब उन्मुख होते हैं जब हम वही करते हैं जो भगवान कृष्ण What does Krishna like? आखिर भगवान कृष्ण को पसंद क्या है। In the spiritual world, he likes to be loved and worshipped and played with even in love and devotion. तो भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें, उनसे प्रेम करें, उनके साथ खेलें, उनके And साथ all आदान people who don't agree with him, they are somehow mad. It's a madness to be in the material world. Material consciousness is of madness. तो भौतिक जगत में होना अपने आप में एक पागलपन है, Because they want to be independent from God क्योंकि वो लोग भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं and do whatever they like. और वह करना चाहते हैं जो वो स्वयं चाहते हैं। You can do that. आप वह सब कर सकते हैं। Krishna gives plenty of facility to do what you like, even to do religion according to your liking. तो भगवान कृष्ण हमें प्रचुर सुविधा देते हैं कि हम वह सब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। Even Krishna consciousness you can practice in a way that as you like it. स्वयं कृष्ण भावनामृत में भी आप उसी प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हैं जिस प्रकार से आप चाहते हैं। I remember one devotee, I asked him this question, what you practice, what you say there is not exactly what Prabhupada told us. तो मैंने एक भक्त से पूछा कि क्या तुम वही अभ्यास करते हो जैसा श्री प्रभुपाद ने स्वयं कहा है। It is your idea of what Prabhupada said. It is your idea, your conception. मैंने बोला ये जो तुम कर रहे हो यह स्वयं तुम्हारी धारणा है। So where is your love for Srila Prabhupada? तो तुम्हारे अंदर श्री प्रभुपाद के लिए प्रेम कहाँ है? And he said, I love Prabhupada. उसने कहा मैं श्री प्रभुपाद से प्रेम करता हूँ। I just don't like what he says. तो मुझे सिर्फ इतना ही पसंद है जो उसने कहा।
Only in America. और बाकी चीजें मैटर नहीं करती। You have to follow the instructions, the guidebook, how we get out of the material world. तो हमें ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करना है कि हम कैसे भौतिक संसार से So बाहर that's why Varnashram Dharma is important. इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बहुत ही Because then महत्वपूर्ण है। everybody understands I'm this, I'm that in this Varnashram Dharma situation. तो हमें फिर इस प्रकार से यह जानना है कि हम किस वर्ण आश्रम धर्म में किस प्रकार There से is no स्थिति में हैं। confusion. तब हमें कोई भी संदेह नहीं रहेगा। Everybody has a prescribed duty, as Prabhupada says. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि सबके पास उनके निर्धारित कर्तव्य हैं। Duty is prescribed. जो कर्तव्य वह निर्धारित होते हैं। If I do my own thing, that's not duty. यदि मैं अपने मन से कुछ भी करूं तो वह कर्तव्य नहीं है। So following the prescribed duty, including studying the holy name, performing devotional service, these are things that come from the top. तो जो निर्धारित कर्तव्य का पालन करना है, जिसमें हरि नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना, यह हमारे ऊपर की परंपरा से आते हैं। They cannot be product of our own mind. ये हम अपने दिमाग के अपने मन के अनुसार नहीं कर सकते। Our mind is always changing. तो हमारा मन सदैव बदलता रहता है। And therefore, the opinion of the public is always changing. और इसी कारण से जो हमारे मत हैं वो भी बदलते रहते हैं। Fashions are always changing. फैशन हमेशा बदल रहे हैं। And one fashion after what is modern today is old fashion tomorrow. जो आज के समय में आधुनिक फैशन है वो फिर कुछ समय बाद पुराना फैशन हो जाएगा। That's the material world. Everything is changing. तो भौतिक जगत यही है कि सब कुछ बदलती रहती है। But Krishna consciousness should not change. कृष्ण भावनामृत नहीं बदलना We चाहिए। have to practice in the same way as we are told by the acharyas, by Guru, Shastra and Sadhu. Then we please Krishna. तो हम भगवान कृष्ण को तब प्रसन्न कर पाएंगे हम जब कृष्ण भावनामृत का अभ्यास उस तरह से करेंगे ऐसा कि हमें आचार्यों ने बताया है, गुरु, साधु और शास्त्र ने बताया है। This is not my opinion. यह मेरा स्वयं का मत नहीं है। Opinions are worthless. I have my opinion, you have your opinion. हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं। मेरा स्वयं का मत है, आपका अपना मत है। This is what Krishna says in Bhagavatam. भगवान कृष्ण भागवतम में यही कहते हैं। What is it? Savai pungsam pro dharmo yathu bhakti. No, they're not that verse. Vanasham dharma vibhagasvas vanuspitas dharmasya samsiddhi hadipushanam. What is the first line of that verse? Vanasham dharma vibhagasvas vanuspitas dharmasya samsiddhi hadipushanam. Savai pungsi? Ata pumbiya dvija shrestha. Vanashrama vibhagasaha sanustitasya dharmasya samsiddhi haritoshanam. Namely, I instituted this Vanashram Dharma system, Sattvavanamashtistam, as Krishna says in Bhagavad Gita, Unakama Bhagavad, sanustitasya dharmasya samsiddhi, that gives pleasure to Krishna. That gives pleasure to Krishna. तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अहम पुंभी द्विजा श्रेष्ठा, और भगवद गीता में आता है कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठा। तो भगवान ये बताते हैं कि जो यह समाज है वह वर्णाश्रम के अनुसार विभाजित किया गया, और जो मूल धर्म है वह है भगवान की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना। I may not like my prescribed duty. मुझे हो सकता है कि मेरे निर्धारित कर्तव्य पसंद नहीं Like आए। Arjuna didn't want to fight. हो सकता है जैसे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते He was a थे, kshatriya to fight. लेकिन वे एक क्षत्रिय थे, उन्हें युद्ध करना He था। wanted to be merciful, and mercy was not called for. यद्यपि वे बहुत ही करुणावान थे, लेकिन उस समय करुणा की आवश्यकता नहीं थी। It was foolishness. यह मूर्खतापूर्ण दया थी। We have to act as a kshatriya. In the same way, we in Varnashram Dharma, we have to act in certain roles to come to the platform of transcendentality. तो हमें वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना है, और उसके अनुसार हमारे अपने निर्धारित कर्तव्य हैं, जिसका हम पालन करके हम एक दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। The whole material world is a gigantic correction facility. Correction facility. हाँ, यह पूरा जो भौतिक जगत है, यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम स्वयं का सुधार कर सकें। Like a jail. A jail is a correction facility. जैसे कि एक कारागार यहाँ सुधार के लिए बनाया In गया है। America, you call a jail a correction facility. अमेरिका में आप इसे करेक्शन फैसिलिटी, To be एक सुधार की corrected. जगह कहते हैं। And so Krishna gives us certain bodies, certain duties, certain prescribed duties, and if we do not fulfill them, we have to come back. तो भगवान कृष्ण हमें कुछ निर्धारित कर्तव्य देते हैं, यदि आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो आपको फिर वापस इस जगत में आना पड़ेगा। We cannot advance like that. आप उन्नत अपने मन से नहीं हो सकते हैं। It may be painful.
यह हो सकता है कि थोड़ा कष्टप्रद हो, but we have no choice. लेकिन हमारे पास कोई और But to समाधान act नहीं है। according to our nature, हमें अपने स्वभाव के अनुसार not कार्य material करना है। nature, according to prescribed duty. हमें अपने निर्धारित कर्तव्य के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। In this way, samsiddhi haritoshnam, we are pleasing God. इस प्रकार से समसिद्धि हरितोषणम And होगा, ultimately we transcend varnashram dharma, we act as souls. और फिर धीरे धीरे हम वर्णाश्रम धर्म को पार करके एक आत्मा के रूप में कर्तव्य का पालन करने लगेंगे। If we are on that platform as a soul, we can do anything. और यदि हम आत्मा के स्तर पे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। A Brahmana can act as a kshatriya, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर सकता है, like Parashuram. जैसे कि The परशुराम, Brahmana acted as a kshatriya. वो एक ब्राह्मण थे लेकिन एक क्षत्रिय की The तरह कार्य kshatriya करता may act as a Brahmana. है। क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। It becomes interchangeable because he is transcendental. तो यदि कोई दिव्य पद तक पहुंच सकता है तो आपस में कुछ भी कर सकता है। But unless we are transcendental, we have to follow dharma. लेकिन अगर आप दिव्य पद तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, Otherwise, we cannot advance in Krishna consciousness. नहीं तो आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर पाएंगे। So, how did we get into this? तो हम आखिर में इसमें कैसे चले, How did we start? तो हम किस प्रकार से आरंभ करें? Huh? Bhakti Swami. He did his duty. तो हमने इस प्रकार से प्रारंभ किया था कि श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने अपने कर्तव्य का पालन He किया। studied engineering उन्होंने इंजीनियरिंग and की he realized that that's not for me. और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह उनके लिए नहीं है। Many of his friends were talking about having girlfriends, कई सारे उनके जो मित्र हैं वह महिला मित्र के बारे में बात किया करते थे smoking cigarettes, और धूम्रपान किया करते थे, taking drugs at that time. वो ड्रग्स लिया करते थे। It's not for me. लेकिन उन्होंने सोचा यह सब मेरे लिए नहीं He है। decided to join the temple. उन्होंने मंदिर में जुड़ना का निश्चय किया When he met Prabhupada, he knew exactly what to do. और जब वे श्रील प्रभुपाद से मिले तो उन्हें पता चला कि So वास्तव में 1, क्या 2, करना है। 3, after a couple, very short time, he was a sannyasi. तो बहुत ही कुछ समय बाद वे एक सन्यासी हो गए And he did his duty as a sannyasi. और उन्होंने एक सन्यासी के रूप में And अपने then when कर्तव्य Krishna sees it, he gives so much Krishna, Shakti, Vinata, Prabhupada, devotee. और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि वे इतना कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, भगवान ने उन्हें इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान की। Because whatever we do is ultimately under Krishna's control. क्योंकि हम वास्तव में कुछ भी करें वह निश्चित रूप से ही भगवान कृष्ण के नियंत्रण में You रहता है। cannot do anything without Krishna. अब भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। How do you scratch your head? आप अपने सिर कैसे खुजला सकते हैं? एक प्रश्न है, What's the answer? उत्तर क्या है? How do you touch your nose right now? आप अपनी नाक कैसे छुएंगे इस समय? You're not the body. आप यह शरीर नहीं है। Then फिर why do you scratch your nose? फिर आप अपनी नाक क्यों खुजलाते हैं? Why do I scratch my head? अपना सिर क्यों हम खुजलाते Because हैं? I, the soul, is penetrating this body with consciousness. क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर में जो व्याप्त है वह है हमारी चेतना। Says in Bhagavad Gita, as the sun penetrates sunlight, the soul penetrates the body with consciousness. जैसा कि भगवद गीता में बताया कि जिस प्रकार सूर्य इस संसार में अपने प्रकाश से पूरा व्याप्त रहता है उसी प्रकार शरीर में चेतना रहती है आत्मा की। Consciousness is the only connection between the body and the soul. चेतना ही एकमात्र आत्मा और शरीर में संबंध बना के रखता है, There's no other connection. कोई और दूसरा संबंध नहीं है। So here I am, Prithu Das, sitting here in class, and right now, to be honest, I have some itch in my ear. I can feel that. Why? Although I'm not the body, I'm conscious of my ear. The soul is conscious of the ear. तो मैं पृथ्वी प्रभु इस समय क्लास दे रहा हूँ और मैं यह अनुभव कर सकता हूँ कि मेरे कान में थोड़ा सा खुजली हो रही है। So if there's no connection between the body but for the soul but consciousness, how do I get my hand from here to there? तो यदि मुझ में चेतना नहीं रही होगी तो मैं अपना हाथ उठा के अपने कान तक किस प्रकार लेकर आऊंगा? How do you do that? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? You're not the doer, it says आप करता नहीं हैं। in Bhagavad Gita. भगवद गीता में ऐसा बताया गया है। It's very simple. यह बहुत ही सरल है। The person inside the body is uncomfortable being conscious of the body that there's an itch in the ear. तो यह बहुत ही सरल है कि जो व्यक्ति है इस शरीर के भीतर वह नियंत्रण में रहता है। Like the passenger in a taxi tells the driver, don't drive so fast, you disturb me. जैसे कि अगर गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा रहे वह गाड़ी चलाने वाले को बताता है कि इतना तेज मत चलाओ। You're not the driver, उसी तरह से हम भी एक चालक you're हैं। the passenger. हम एक But the driver understands the desires of the passenger.
तो जैसे ड्राइवर जो है पैसेंजर एक जो Who is the driver? ड्राइवर पैसेंजर की जरूरत समझता है और ड्राइवर कौन है? The super soul. ड्राइवर है आत्मा। Without the super soul, nothing happens. ड्राइवर परमात्मा है और परमात्मा की So बिना if कुछ नहीं हो सकता। I, being in this body, feel my body and I feel I have an itch in my ear, how do I do it? The Lord understands my desire. It's in the heart. Right? यदि हम इस शरीर में हैं और हमें खुजली होती है, हमें कुछ असुविधा होती है, तो भगवान हमारी इच्छा समझते हैं और हमें फिर संकेत मिलता So है। we call the demigods. Hello? तो फिर हम देवताओं को फोन This करते is हैं। Krishna. तो फिर Shri Bhagavan ki jai. डेमिगॉड्स भगवान कृष्ण को फोन करते हैं और वो भगवान Can you please lift the hand of this Prithu Das? He wants to scratch his ear. तो फिर भगवान कृष्ण देवताओं से बोलते हैं कि आप पृथु प्रभु की इंद्रियों को एक्टिव कर सकते हैं जिससे अपने कान खुजला Of सकते हैं। course, Shri Bhagavan. तो देवता बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। Then this is how that works. तो उसके बाद हम अपना कान उठा के खुजली कर सकते हैं। It's simple. बहुत ही सरल है। Even something so simple like scratching your head, we have the understanding of that, a very deep understanding that although we're not the body, we are conscious of the body, although we have no connection to the body, there are no strings, no pulleys, nothing to the body from the soul. We can only do this, we can see because of the super soul, we can eat because taste because of the super soul, we can lift our hands in fast, so fast, like look at it. So much of it I do. It's not me. I'm desiring to do. I'm the desire. Nitya Nityananam Chaitanas Chaitananam Ekubaho Yo Viridhati Kaman. The Lord fulfills the desires of all living beings. That's the Sanskrit verse right there. तो फिर जैसे कि शरीर और आत्मा में कोई भी चेन पुली से संबंध नहीं है, इसमें भगवान ने एक इस प्रकार से संबंध बनाया है कि हम अपने चेतना से यह सब कर पाते हैं। You cannot, that doesn't mean you can excuse, when you kick somebody, you can say, well, it's not me doing, I'm not the doer, it's a super soul. You can't do that. तो फिर ऐसा देखिए, हम जब कुछ भी काम करते हैं तो फिर हम इसको इतना स्वाभाविक ढंग से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यह सब परमात्मा के द्वारा नियंत्रण में होता है। Why are you beating me? Why are you beating me? I ask the question, somebody is beating me. Why are you beating me? मान लीजिए अगर मुझे कोई मारे तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? Prabhu, I'm not beating you. I'm just the instrument of your karma. तो फिर अगर हम उत्तर दें कि हम तुम्हें मार नहीं रहे, हम सिर्फ एक कर्म के एक निमित्त मात्र हैं। But you want to beat him. लेकिन वास्तव में आप उसे मारना And he needed to be beaten. या आप उसे मारना चाहते Because he has been beaten somebody previously. क्योंकि उसे पहले पूर्व में मारा गया है। It's eye for eye, tooth for tooth. It says in the Bible. तो जैसे कि कहते हैं जैसे को तैसा। Whatever we do in one life comes back. जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा अगले जन्म में वापस। I remember there was a devotee. What was his name? Huge tennis player. Remember Peter Boerwas. Peter Boerwas was a huge, famous tennis player, and he became Prabhupada's follower in Hawaii. तो पीटर बोस एक बहुत ही काफी प्रख्यात टेनिस प्लेयर थे, वो एक बार श्री प्रभुपाद से मिले। He wrote many books. You can see sometimes in the Krishna shops we sell them about how to be this, how to do that, how to do practical things. So one devotee stayed with him, and in Hawaii, in his complex, in his resort, and he saw there was so much money on the table, so he took a little bit of that money, good bit of it. In fact, he took all of it, ran out of the door, and went to heaven, quote unquote. So one devotee stayed in his house, young boy. He just joined. When he saw in his house there was so much money lying on the table, he couldn't resist to take that money. And he left to enjoy that money. So Peter Boerwas went to Prabhupada and said, "Yeah, Prabhupada, one of your followers, I gave him a place to stay, he stole my money." तो एक भक्त जो नया नया मंदिर से जुड़ा था, उसने पीटर बोस के यहाँ देखा कि बहुत सारे रुपए रखा है और उसने ऊपर उठा लिया। फिर पीटर बोस ने श्री प्रभुपाद को जाके बताया कि श्री प्रभुपाद, आपका एक भक्त ने पूरा रुपया उठा लिया है। So Prabhupada, don't complain. श्री प्रभुपाद ने उसकी कोई कंप्लेन नहीं। He's just the instrument of your karma.
इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि यह जो तुम्हारे कर्म है उसके परिणाम फल है, You must have done something तुमने ऐसा कुछ किया होगा। similar. उसी प्रकार से It just comes back to you इसलिए ये तुम्हारे पास वापस आ गया in due course of time. कुछ समय बाद। Just like Bhishma was lying on the bed of arrows, जिस प्रकार से भीष्म शरशैया पर लेटे हुए थे and he asked Lord Krishna, "Why am I on a bed of arrows? I can remember 100 births, and I have not done anything of that sort." तो भीष्म देव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आखिर मैं यहाँ पे ऐसे इस प्रकार क्यों लेटा हूँ, मैं अपना पूरा ना 100 वर्ष याद कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया। भगवान कृष्ण ने आप पता In क्या your कहा? 101 birth, भगवान कृष्ण ने कहा आपकी 101वें जन्म में you shot the bird with your arrow, आपने चिड़िया को and तीर से मारा that bird was falling into a thorny bush. और फिर वो चिड़िया एक कटीली झाड़ी पे He गिर was गई, pierced by many thorns. उसको कई सारे कांटे चुभे He was lying there for 18 days. और वो वहाँ पे 18 दिन लेटी थी। When the bird died, he said, "I curse you that you will lie in the same way, pierced like I am right now." और फिर उस चिड़िया ने श्राप दिया कि मैं जिस प्रकार से लेटी हूँ उसी प्रकार से आपको भी यह दुविधा झेलनी पड़ेगी। And that's why Bhishma ended up with 18 days, the length of the battle of Kurukshetra. He was lying on a bed of arrows. इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म देव भी 18 दिन तक लेटे रहे थे। So we cannot escape karma तो हम कर्म से बच नहीं सकते except by one thing. सिर्फ एक चीज को छोड़ के। What is that one thing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. More karma is destroyed than one is able to commit in one lifetime. यदि हम भगवान के नाम का जप करें हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम इतने कर्म फलों से बच सकते हैं जितना हम कर सकते हैं अपने जीवन Otherwise, में। karma comes back to you नहीं तो फिर कर्म आपके जीवन में वापस आ जाता sooner or है। later. There was one boy, I gave a lecture in Leipzig one time, and I talked about karma. And a boy came after and said, "Well, you say that's ultimately my own karma, but how do I deal with it? My father, he was beating me every day, practically speaking. What I'm supposed to think about that?" तो फिर एक बार एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था, तो फिर एक लड़का मेरे पास आया, बोला कि आप सब कुछ कर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पिता रोज मेरी पिटाई किया करते थे, तो मैं इसके लिए क्या करूं? So I said to him, he asked this question in lecture. I said, "Peter, I tell you later. Come after the class. तो मैंने उनको Let's finish the class, eat prasadam, and then we talk." तो फिर मैं बोला ठीक है, तुम प्रसाद वगैरह लो, क्लास के बाद फिर हम आराम से बात करेंगे। So he came. तो फिर उसने He वहाँ said, आया, "What happened?" फिर उसने पूछा क्या हुआ? I said, "My father has beaten me throughout my life. तो उसने बोला कि मेरे पिता पूरी जिंदगी भर मुझे मारते रहे, So when I was 20 years old, I was fed up. और फिर जब मैं 20 साल का था तो एकदम परेशान हो गया। I threw a plate of food in his face, मैंने एक खाने की प्लेट उनके सिर पे मारी ran out of the door, और दरवाजे तक गया, slammed the door really hard. दरवाजे पे जोर से लात There मारी, was a chair outside. I threw the chair to the door, एक कुर्सी उठा के दरवाजे पर फेंका, and I made a vow never to see him again. और फिर एक शपथ ली कि मैं अब उन्हें कभी दोबारा नहीं देखूंगा। I said, "Can you forgive him?" मैंने उससे पूछा क्या तुम क्षमा कर सकते हो? Never. उसने बोला नहीं। I said, "You must." मैंने बोला तुम्हें जरूर करना How चाहिए। do I do that? तो बोला कि मैं ऐसा कैसे कर I'm so सकता हूँ, angry. मैं इतना गुस्से में He हूँ। said, "It's difficult to be forgiving on the mental platform, on the emotional platform. मैंने बोला कि मैं मानसिक स्तर पर रहते हुए क्षमा करना आसान है। Even if you forgive him now, tomorrow you will not forgive. You go back and forth because the mind is always changing. अगर आप मानसिक स्तर पर उन्हें क्षमा करेंगे तो आप कल फिर उनसे नाखुश होने पर उन्हें क्षमा नहीं कर Sometimes you पाएंगे। forgive a person and you again become angry. Back and forth. आप हो सकता है कभी किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, लेकिन फिर अगले दिन उस पर फिर गुस्सा हो जाते हैं। That's the nature of the mental platform. यह मानसिक स्तर का यही So स्वभाव है। our forgiveness has to be on the platform of intelligence. तो हमारी जो क्षमाशीलता है वह बुद्धिमत्ता Because के स्तर पर होनी intelligence is चाहिए, steady. क्योंकि वह एक Mind is always changing. क्योंकि वह एक स्थिर स्तर पर है, वह बदलती नहीं है। Like, what is your name? Where are you from? What? राजस्थान। Rajasthan, okay. So no matter how you feel good or bad, you know you're such and such from Rajasthan, right? It doesn't change, right? You feel good, you feel bad, you hate it, you love it, you're from Rajasthan, right? So that because that's more fixed, these logic, reason, argument things are on the platform of intelligence. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वह कौन है, कहाँ से है, उसको पूरी तरीके से पता रहता है और यह बात स्थित रहती है, तो वह विचलित नहीं होता है। So I told this boy,
you have to forgive your father. By logic, reason, argument, you have to understand that ultimately you must have been a bitch you must have been a bad boy in your last life. You did exactly the same thing. Not exactly the same thing, something. तो मैंने उससे यह कहा कि तुम्हें अपने पिता को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा यह समझना चाहिए कि हो सकता है पूर्व जन्म में तुम एक बहुत ही बिगड़ैल लड़के रहे होगे। Suffering comes to you in a slightly different way. जो हमें कष्ट होते हैं वहाँ थोड़ा भिन्न प्रकार से आते But हैं। in essence, it's the same. You have to suffer all the emotional and the physical pain you cause to somebody else. That's a fact. लेकिन मूल तो यह है कि आपको भावनात्मक और शारीरिक सारे चुनौतियों को सहना पड़ता है। When you have paid the bill, जब आप किसी बिल का भुगतान करेंगे, then you can go on. तभी आप आगे जा सकते हैं। There's a famous story that I personally experienced. I went to one place in Russia. It is called Chelyabinsk. तो रूस में एक जगह है जिसे कहते हैं Chelyabinsk. चेलेबिंस्क। It's a Russian town. And I was told there was a story, there was a person, they called the boy of Chelyabinsk. तो मुझे एक कहानी बताई गई, एक लड़का जिसे बॉय ऑफ जेलेबिंस्क कहा जाता And था। he was kind of a spiritistic person. तो वह एक तथाकथित आध्यात्मिक He व्यक्ति था। foresaw Gorbachev coming 40 years later. He said, man with a mark on his forehead. He foresaw Gorbachev, president of Russia, who came 40 years after him. अच्छा, उसने वह उसको दृष्टि थी कि वह आगे का देख सकता था। And he knew many things about what people didn't know. और वह ऐसी कई सारी चीजें जान सकता था जो आम लोगों को नहीं पता And थी। so they asked him, where's Stalin? तो एक बार उससे पूछा गया कि स्टालिन कहाँ है? He said, I have gone to hell. तो उसने बोला कि वह नर्क में है। In one of my imaginations, I went there. In one of my trips, I went to hell. तो बोला था कि एक बार अपने मानसिक जो यात्रा थी उसमें मैं नर्क गया। So people asked him, what did you see? उसने लोगों ने पूछा आपने वहाँ क्या देखा? He said, I met Stalin. उसने बोला कि मैंने स्टालिन को देखा। What was his? तो पूछे कि उनकी स्थिति He क्या said थी? he's sitting in a huge glass ball of boiling oil. तो उसने बताया कि वह एक बहुत ही बड़ी गेंदनुमा आकृति पे बैठा Even है, his head is under the oil. जहाँ पे तेल उबल रहा है उसका सिर तेल के नीचे है He's screaming और वह जोर से चीख रहा in है, pain. वह प्रार्थना कर रहा Two है। people standing there with his forks, guarding him. दो व्यक्ति भाला लेकर उसकी देखरेख कर रहे हैं। He said, how long is he in there? वहाँ पे कितने समय से ऐसा पूछा गया? 1947. तो 1947 से वह वहीं पर है। How long does he have to stay? वहाँ पे कब तक रहेगा? Till he has suffered all the pains and all the physical pains, emotional pains he caused to others. जब तक वह अपने जितने भी शारीरिक और भावनात्मक जितने भी कष्ट हैं उसकी प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह वहीं पर रहेगा। And then he can go. उसके बाद फिर वापस आ गया। Karma is very cruel. कर्म बहुत ही क्रूर है, You have to pay the price. आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। So I told him, you must have done something that your father is beating you. You should forgive him. तो मैंने उसे बोला कि तुम्हारे पिता तुम्हें मार रहे हैं, लेकिन उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। So he left. तो फिर वह चला He गया, went home. वह घर चला गया। And I looked on the watch. It was 20 minutes, 8 o'clock in the evening. तो मैं उस समय घड़ी देखा, शाम के 8 बज रहे थे। Next morning, this boy was on the phone. शाम को अगले दिन उसने फोन किया। True story. He was on the phone. He said, "My God, my father was on the phone." तो फिर My father was on the telephone. He called me. तो उसने मुझे फोन किया और वह बोला कि मेरे पिता भी फोन पे थे। He said, "When have you talked to him the last time?" तो मैंने उससे पूछा कि तुमने उनसे आखिरी बार कब बात 20 की? years ago. उसने बोला 20 साल We have पहले। no connection. उसके बाद से कोई संबंध He नहीं was था। on the phone. और फिर And he told me, "Son, I made many mistakes. तो फिर उसके पिता ने उससे कहा कि मैंने बहुत सारी I गलतियां की realized that I'm going to die. और लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, Please forgive me." मुझे क्षमा कर दो। And in fact, I want to visit you. He was in Hamburg. From Hamburg to Leipzig is what? What is it? 4 hours by car. 200 kilometers away from each other. The father called him.
तो फिर वो पिता और पुत्र आपस में सिर्फ 200 किलोमीटर की ही दूरी पर थे। I want to know what you do in the Hare Krishna temple. और फिर उनके पिता ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हरे कृष्ण मंदिर में क्या करना The चाहते boy हो। said, Father, you have not seen us for 20 years. When did you change your mind? तो फिर पुत्र ने पिता से पूछा कि हम लोग एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले हैं, आखिर बताइए कि आपने अपना दिमाग कब बदला। I thought it last evening, yesterday night. तो उसके पिता ने बोला कि मैंने यह कल रात को ही बदला अपना At दिमाग। what time? मैं पूछा कि किस समय। 8 o'clock. तो बोला रात के 8 बजे। So you see how super soul works. आप देखिए किस प्रकार से परमात्मा कार्य It's करता a है। moment when he desired to forgive his father had the same idea playing on the other side, and he called him in the morning. तो जिस समय उस लड़के ने अपने पिता को क्षमा करने का निश्चय किया, उसी समय उसके पिता ने भी यह निश्चय किया कि वो क्षमा करके उन्हें फोन करेंगे। So today we celebrating Lord Advaita Acharya's appearance day. तो आज हम श्रीला अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि मना रहे I हैं। came to read actually from Chaitanya Charitamrita, मैं चैतन्य चैतामृत से पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ, but we got carried away into different directions. लेकिन हम अन्य दिशा में भ्रमित हो गए। But we have to understand who is the father or living entities in Bhagavad Gita. Ambija Pradapita. Who is that? तो हमें लेकिन यह समझना है कि आखिर में सारे जीवों का पिता कौन है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं Is that अम्बीज Krishna? प्रदापिता। वह भगवान कृष्ण है। Is that Krishna? क्या वह कृष्ण है? No. नहीं, It is Sadashiva. यह सदाशिव हैं। There are two Shivas. दो शिव हैं। One Shiva is in the spiritual world. He's a manifestation of Krishna called the Sadashiva. एक शिव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति हैं, उन्हें सदाशिव कहते And हैं। then Mahesh is there. He appears from the anger of Brahma. और दूसरे महेश हैं जो कि भगवान ब्रह्मा की भौहों से प्रकट होते हैं। There are two Shivas. दो शिव हैं। So this Shiva in the spiritual world is the Sadashiva. He is a manifestation of Advaita Acharya. तो भगवान कृष्ण के जो अभिव्यक्ति हैं भगवान सदाशिव, वे अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। Or the other way around, I don't know. या फिर अन्य प्रकार से मैं Either he is a manifestation of Advaita or Advaita is a manifestation of him. या फिर हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि अद्वैत आचार्य सदाशिव के रूप में आते हैं, फिर सदाशिव अद्वैत आचार्य के रूप They में। are Achinta, Veda, Tattva. They are simultaneously, inconceivably one and different. तो यह समझ के बाहर है, अचिंत्य भेदाभेद। So this Sadashiva, when there is time for creation, तो यह सदाशिव जब सृष्टि का समय होता है, he is actually the cause of all the universes. तो यह पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि का कारण होते हैं। And when there is time for procreation of living entities, और जब भी इस संसार में जीव प्रकट होने वाले होते he हैं, glances over Rama Devi, तो फिर वो रमा देवी के ऊपर अपनी दृष्टि डालते the हैं। personification of the mother in the spiritual, in the material world. Rama Devi. रमा देवी, Rama Devi. हाँ। Is ultimately an expansion of Radharani. तो रमा देवी जो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। So he inseminates by glancing Rama Devi with millions and millions of living entities. तो फिर सिर्फ अपनी दृष्टि से लाखों करोड़ों जीवों का निर्माण कर देते हैं। And this act of insemination is worshipped in the material world in the form of worshipping the Shiva Linga. तो फिर यह जो जीवों के प्राकृतिक यह जो यह जीवों का प्राकृतिक यह स्थिति है, इसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता That's why है। the Shiva Linga is a phallic symbol. तो शिवलिंग एक Phallic, you know, मणि, male part. तो ये एक पुरुष अवतार है पूजा का। So interestingly enough, this act of procreation is not even the glance of Lord Sadashiva. It's the halo of the glance, as it says in Brahma Samhita, the halo of the glance. You know, like, for example, you have sunlight, but there's a halo around it, you know. So the glance of Sadashiva, not even the glance, the halo travels into the material world to inseminate Ramadevi. तो फिर जो यह जीवों की निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें जीव आते हैं संसार में, यह वास्तव में सदाशिव की दृष्टि भी नहीं है। यह सिर्फ एक दृष्टि का आभास मात्र है जो कि संसार में आती है, और रमा देवी से फिर इतने सारे जीव प्रकट होते हैं। So the act of procreation in this case is super subtle, it's transcendental. तो यह जो जीवों के प्रकट होने की स्थिति है, यह एक
बहुत ही सूक्ष्मतर है, यह पूरी तरीके से दिव्य स्तर पर है। In comparison to that, the sex life in the material world is very brutal. तो उस अगर हम तुलना करें तो इस संसार में जो भी यौन संबंध है वह काफी निम्न स्तर पर It's है। very gross. It's a gross act यह पूरी तरीके से स्थूल of procreation. यह पूरी तरीके से स्थूल है प्रजनन के। Male gives his seed to female, of an animal, human being. It's a very relatively gross act of procreation. स्त्री पुरुष जानवरों में जो यह संबंध बनाते हैं पूरी तरीके से स्थूल At least in comparison to the very wonderful, super subtle, transcendental way how Lord Vishnu is inseminating the world with living beings. तो हम देखेंगे कि कितना शुद्ध, सूक्ष्म और दिव्य स्तर पर भगवान विष्णु जो हैं इन जीवों को प्रकट कर रहे हैं। So that Sadashiva, he is Lord Advaita. वह सदाशिव अद्वैत आचार्य हैं। And he was praying to the Lord, please you must appear because I can't do it. This world is going crazy. और वह अद्वैत आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आपको प्रकट होना ही होगा क्योंकि यह पूरा संसार पागल होता जा रहा He है। was worshipping the Srila वह शिलाओं की पूजा करते थे with Ganga water. गंगा जल के साथ। So then the Lord appeared. फिर भगवान प्रकट हो गए। And so this Ahambira Pradapita, we should understand that's actually Sadashiva. It's not Krishna. It's an expansion of Krishna in the form of Sadashiva. तो फिर जब भगवान कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदा प्रत्या, तो हमें पता चलना चाहिए ये सदाशिव हैं। If you study Brahma Samhita, you can see this very clearly. जब ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो आप बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। So in the same way, we should understand, my dear Lord, this world is going katam pagal. This world we experience, we see, you go out of the temple, madness starts right there. It's a crazy place. तो हमें यह समझना हो कि यह जो पूरा संसार है यह पूरी तरीके से एक पागलों की जगह है। And people are working like anything लोग किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं for something that they will lose किसी ऐसी चीज के लिए जो वो किसी क्षण खो within सकते 10 हैं। years or 20 years or 40 years. 10 साल 20 साल 40 साल में खो देंगे। Whatever you have, you lose. फिर उसके साथ आखिर वो क्या What kind of करेंगे? career is that? यहाँ आखिर किस In प्रकार one का life you career may है? be a big man, in the next life you may be an animal. आप हो सकते हैं इस संसार में बहुत बड़े आदमी हो, अगले जन्म में आप जानवर बनेंगे। This is not a good career, is it? यह एक अच्छा करियर नहीं है। So material life is not progressive. तो फिर यह जो भौतिक जीवन है यह प्रगति की ओर नहीं ले Spiritual जाता। life is progressive. आध्यात्मिक जीवन प्रगति। Nothing is more progressive than the International Society for Krishna Consciousness. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के समान इस संसार में दूसरी कोई भी चीज प्रगति की ओर नहीं So ले just जाती। like Lord Sadashiva, Lord Advaita Acharya was praying, my dear Lord, I can't do it. Please, you have to come yourself. जिस प्रकार से अद्वैत आचार्य यह प्रार्थना करते थे, हे भगवान मैं नहीं कर सकता, आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। So in the same way, we should pray to Lord Advaita Acharya. Please teach us how to pray that this movement becomes successful. उसी प्रकार से हमें यह प्रार्थना करनी होगी श्रील अद्वैत आचार्य से कि आप हमें यह शक्ति दीजिए, हमें प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए कि हम इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। Please give us some brain for preaching. हमें प्रचार करने के लिए बुद्धि दीजिए। Most people have no brain for preaching. Even when they go to the temple, they have no brain for preaching. कई लोगों के पास बुद्धि ही नहीं प्रचार करने के लिए। हो सकता है वो मंदिर में हो लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। Many pious Hindus come to the temple. कई सारे पुण्य वाले हिंदू मंदिर में आते हैं But they have no brains for preaching. लेकिन उनके पास प्रचार के लिए बुद्धि नहीं है। If you have brain for preaching, that's the mercy of Lord Chaitanya. अगर आपके पास प्रचार के लिए बुद्धि है तो यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। Prabhupada asked this question in London. श्री प्रभुपाद ने लंदन में एक प्रश्न किया What is the most important verse? कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है। And I said to Srila Prabhupada personally, I said, Yadidika ka Krishna Upadesh, wherever you go, Yadidika tarikaha, there you speak Krishna Upadesh, you speak spiritual life. मैंने श्री प्रभुपाद से कहा यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ कहीं भी आप जाएं भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार करें। And so Prabhupada said, yes, this is the most important verse. श्री प्रभुपाद ने कहा हाँ यही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। And so when we preach, और हाँ जब हम प्रचार and करते हैं, particularly when we do book distribution, if we work hard, we will find that Krishna helps us to distribute books. विशेषकर कि जब प्रचार में जब भी हम पुस्तक वितरण करते हैं तो हम देखेंगे कि हम जब कठोर प्रयास करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि भगवान कृष्ण हमारी Many सहायता of कर रहे our हैं। book distributors, big book distributors, will tell you that I'm able to distribute so many books today because Krishna helped me. It was by Krishna's mercy.
आप किसी भी बड़े पुस्तक वितरक से पूछेंगे तो बताएगा कि हाँ, मैं इस पुस्तक वितरण इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझ पर भगवान कृष्ण की Just कृपा like है। our German devotee Manidara. तो एक भक्त हैं He मणिधर, used to, when he chants, he used to have the Bhagavad Gita like this, praying, "My dear Krishna, please allow me to distribute many books. Please allow me. Without you, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. I cannot distribute books." He was holding Bhagavad Gita like this, praying to allow to be a big book distributor. तो एक भक्त हैं वो जप करते समय भगवद गीता को उठा के अपने हृदय के से लगा के रखते हैं और यह प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी सहायता करिए, मैं आपके बिना कोई भी पुस्तक वितरण नहीं कर पाऊंगा। We have to do the effort. We have to do our best. हमें भी प्रयास करना है, हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना है। Then Krishna will do the rest. तब भगवान कृष्ण जो बचा है वो कमी पूरी And I करेंगे। will tell you now finally a little story of my own experience on book distribution. तो मैं आपको अपने स्वयं व्यक्तिगत अनुभव की एक कहानी बताऊंगा बुक I was working very hard, as fast as possible, to distribute as many books as possible. मैं बहुत ही मेहनत किया करता था, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पुस्तक वितरण करने की। One day, the best day of my whole book distribution एक दिन की बात है जो कि मेरे पुस्तक वितरण का सबसे अच्छा दिन था। was the best. यह सबसे अच्छा था। True story. यह सच्ची घटना है। Listen to this. So I was distributing, and people came up to me and said, "What do you have there?" And even the book was like, I looked on the watch. After 22 minutes, 18 Bhagavatams had been distributed. That's humanly impossible. एक दिन मैं पुस्तक वितरण कर रहा था तो उस दिन मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे थे और मैं ऐसे तुरंत ऐसे पुस्तक दिए जाता रहता और फिर मैं देखा 18 मिनट बाद मैं कुछ 22 मिनट बाद मैं 18 भागवतम दे चुका था। It's impossible. यह असंभव है। Krishna can stretch time. भगवान कृष्ण समय बढ़ा सकते हैं। In Krishna consciousness, you have actually time. In Maya, you have no time, practically speaking, because Krishna is the time. कृष्ण भावनामृत में आपको समय मिलता है, माया अगर आप भौतिक काम करेंगे तो उसमें कोई समय नहीं मिलता। When I looked on that watch, I said, "Wow, amazing Prithu." तो जब मैं घड़ी देखा तो फिर मैं सोचा, वाह, मैंने कितना अच्छा काम कर दिखाया। I became so puffed up. मैं पूरा गर्व से फूल गया। The next 3 hours, I couldn't distribute a single book. अगले 3 घंटों में एक भी पुस्तक नहीं गई। Krishna hit me on the head. See, when we distribute, whenever we do something, the empowerment is very important. We have to ask Krishna, please empower me. Like Prabhupada said, I'm just a doll. Make me dance, make me dance, make me dance. I cannot do anything. We have to ask for that mercy. Haridas Thakur said, nobody in this world can chant without interruption, without, without attention, without the mercy of God. And therefore we have to pray for that mercy. तो हमें कभी भी गर्व से फूलना नहीं चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते थे, जैसे प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, मैं कठपुतली के समान हूँ, आप मुझे जिस प्रकार से चाहें स्वयं उस प्रकार से न चाहें। और श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान नित्यानंद की कृपा से कोई भी भगवान का नाम नहीं जप कर सकता है। Let me find it for you. I have to repeat what I know from my mind. Haridas Thakur said, no one in this world is able to chant without distraction, without the mercy of God. Therefore, we have to pray for that mercy. श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई हरि नाम का जप भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें In the same way, Prabhupada, he was one man. He did enormous. When he was in an old age, he went all over the world, and he did so many things: 100 temples, 100 books, 11 times around the planet, more than 5,000, even 10,000 disciples. How could he do it? Krishna Shakti Vinanarta Pravartana, by Krishna's grace. इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद के जीवन भी देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में इतने वृद्धावस्था में 108 से ज़्यादा मंदिर बना दिए, 5,000 से 5-6 हज़ार से ज़्यादा उनके शिष्य बन गए और पूरी दुनिया को उन्होंने इतनी बार भ्रमण किया। तो हम यह देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब तक किसी को शक्ति ना प्रदान करें, कृष्ण यह नहीं हो सकता। प्रभुपाद की। Any question? Thank you for a very much wonderful class. Thank you very much for wonderful class and many insights and full of many stories and your personal realization from the example of the stories. That was very inspiring. I would like to ask Prabhuji, like you said, like Vishwadev.
1014, and also like when we do bhakti, like well, nobody can understand Krishna, and nobody can understand the pure devotee. That's why even when it comes to Christianity, they can understand Jesus, because you have to be pure devotee to understand Jesus. You know, in the same way, we can't really understand Lord Bhishma's or Bhishma's pastimes in depth. We can understand something. You know, so I don't know. I can't answer this question. You know, you have to ask somebody else. I doubt anybody can give the answer. Krishna knows why all these things are manufactured by Krishna. We cannot understand. We cannot understand a pure soul like Bhishma. You know. But we know from scripture, we know the stories in scripture, it's described. Therefore we know. Otherwise we don't know. Is that okay? Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premananda Hari Hari Bol. Sargira Vidyajal, Sanjaya Charakar, Jisle Sagade, Tavdi Zaiti, Goma Mai Sudumati, Tagade, Tagade.